आउ थरे मो सैम्पलिंग टा स्टार्ट करूची। सैम्पलिंग रो एक्चुअली अर्थ होची आमे गोटे ग्रुप ऑफ डेटा टा को फोकस करिवा, पूरा ग्रुप को फोकस करिवा, ग्रुप रु पुनी सब ग्रुप करिवा, सब ग्रुप रो किछि वैल्यू नबा। ओके जेमति कि हमर एटा बळे ए जो डेटा साइंस टा बेसिकली हमर कोविड मैनेजमेंट रे पूरा प्रॉपर्ली एटा इंप्लीमेंट हेची। म तारी एग्जांपल नउची हमर कोआ जाय जे गोटे ना सुनती गोटे सर्विलेंस हम। सर्विलेंस माने कौन हुए से गोटे ग्रुप ऑफ पीपल माने से माने कहले भुवनेश्वर रे आज सर्विलेंस हम ठीक अछि गले जाय साला परे से माने से सर्विलेंस रे डिवाइड कले केते जण लोक ऑलरेडी भुवनेश्वर रे अछंती से माने कोडे जाई नांती केते जण जाइचंती डिफरेंट स्टेट को जाइचंती आउ केते जण डिफरेंट कंट्री को जाइचंती। तो बेस्ड अपॉन द कंट्री बेस्ड अपॉन द व्हाट आमे कहि परिबा जो डिफरेंट स्टेट को जो जाइचंती ता भितरु से कोन करिवे किछि लोकन को से नेबे किछि लोकन को नेकी तांको टेस्टिंग करिवे जदि टेस्टिंग रे से माने पॉजिटिव आछंती दैट मीन्स से माने पूरा डिक्लेयर करिवे जे यदि तादर मैक्सिमम लोक पॉजिटिव आसिले 10 जन लोक रो 10 जन रो हमर 5 रो अधिक लोक बाहरिले ओके माने 5% माने 100 को टेस्टिंग करिवे यदि 5% रो अधिक हमर आसिला ताले से ताको रेड जोन किबा ताको कंटेनमेंट ए सब डिफाइन करिवे किबा हमर जो लॉकडाउन भी जो उठुची ए टाइप रो ही उठुची टोटल ओडिसा को निया जाउची ओडिसा को पुनी कैटेगरी निया होउची दे एबे सुन तो ए कैटेगरी बी कैटेगरी कैटेगरी ए को जोटी कमी आउसी 5% तळक रहउची से माने कैटेगरी ए को पळे आछो ए को पळे आछो तांकर खोला रहउची बी वाला रेस्ट्रिक्शन रहउचंदी तो इट्स जस्ट लाइक दैट माने एठी देखो मु एटा ए पिक्चर ही एटा तुमको सैंपलिंग रा पूरा एग्जांपल दबो एटा ला ग्रुप ऑफ पीपल ए पीपल रो मु सैंपल कली माने सिलेक्ट कली गोटे पर्टिकुलर लोक मानको ये गोटे कैटेगरी तो ए कैटेगरी भितरु मु पुनी एमानक भितर एठु जॉइन नेबी आठु जॉइन नेबी एठु जॉइन नेबी एठु जॉइन नेबी एठु जॉइन नेबी माने ए जो 1 2 3 5 पांचटा ग्रुप रहिला ए पांचटा ग्रुप रो जण जण को नेकी टेस्टिंग करबी नॉट ऑल यदि आंक भितर जण को किछि प्रॉब्लम अछि दैट मीन्स मु डिफाइन करबी जे ए ग्रुप टा ही पूरा प्रॉब्लम अछि यदि आंक भितर किछि प्रॉब्लम नै कोनोसी गोटे ये भितर प्रॉब्लम नै दैट मीन्स प्रॉब्लम नै माने आमे कहि परिबा जे गोटे ए धर पांचटा घर अछि तुमर माने तुमर घरे माने बाउंड्री रे सपोज माने बापा और जेजे बापा कि बापा दादा मिसी की 5 जन लोक अछन तो पांचटा फैमिली तंकर चलनी डिफरेंट तो सी कोन करिवे 5 जन को भितर जन जन को देखिबो तो समस्त घर जन जन लोक को नेबे टेस्टिंग करिवे सपोज आंक भितर जहा को धर गोटे पॉजिटिव बाला पूरा घर लोक टेस्टिंग करिवे आ जार पॉजिटिव न बाला तले आ अन्य लोक को से टेस्टिंग करिवे नै तो सैंपलिंग इज जस्ट लाइक दैट माने मु गोटे ग्रुप ऑफ डेटा नेबी ग्रुप ऑफ डाटा को अगेन कैटेगरी करिवी कैटेगरी करके पुनी से कैटेगरी रो गोटे वैल्यू को नेकी चेक करिवी तो दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग ए सैंपलिंग टा केमथि हुए आर भी डिफरेंट मेथड अछि जो एटा गोटे दैट आई एम टेलिंग यू द हिट एंड ट्रायल मेथड ओके ए वे रे सैंपलिंग करा जाए बट एक्चुअली व्हाट इज द माने मेन टेक्निक वी आर यूजिंग sampling technique of selecting individual member or a subset of the population to make a statistical inference from them and estimate characteristics of the whole population. It's just मुझे example दो माने आमे गोटे selecting individual member गोटे गोटे group रो individual member को नबा or subset of population to make the statistical inference from them and estimate character of the whole population. Different sampling methods are widely used by researchers in market to research so that they do not need to research the entire population to collect the actionable insight. It is also a time of convenient and cost efficient method and hence form the basis of any research design. It is a also time convenient and cost effective method. कहीं
मते टोटल लोकों को मते टेस्टिंग करिया दरकार नै I have to take only one people from the group of subset value. Sampling technique can be used in a research, survey, software or optimum derivation. जैसे कि अबे देखी थी वो Windows 11 operating system has launched, and in that when it has launched, before that it giving a form. Those are want to interest to use it. Okay, so जो मैंने यूज करिवे से मानको से गोटे कैटेगरी कला आ तांको से ऑपरेटिंग सिस्टम देला. Okay, then again Microsoft is verifying that मु जहा को डेली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करिवा को there belongs to which category, they are student, they are professional, or they are businessman, or they are a normal user. So Microsoft is analyzing with the feedback and with the age category or some kind of questions and decide that this category people, I have this category people and they are using it. So se basic define karibo je jo mane technical achanti, so how they are using, and those are only working in the normal market or normal office. Because if you compare to software industry and normal users are usually it is having a huge category. For example, देखो एठी हमरा नियाला जे if a drug manufacturer would like to research the adverse side effect of a drug on the country population, it is not almost possible to conduct a research study that involves everyone. In the case, the researcher decide sample of people from each demographic and then research them, giving him or her indicative feedback on the drug behavior. It's just example of your vaccination testing phase जो हमर होतला previous year रे. So first of all they choose the volunteer. The volunteer मानको आने की vaccine दियाला and they testing all the body. तांकर कोनोसी health disease अछि, जरा health disease अछि, diabetes अछि, or any kind of severe disease रे से माने रही चंदी से category गोटे नेला गोटे पूरा completely good health people मानको भी दियाला age category अनुसार भी दियाला ता भीतर टेस्ट कराला जे हमर वैक्सीन टा केते इफेक्टिव रोज. So based upon that effectiveness, the effectiveness को देखेगी से माने कोन करंती ना अलाउ करंती अदर लोक माने को दवा पय जदि सेठी किछ साइड इफेक्ट असलानी that means the vaccine is working, or जदि साइड इफेक्ट 90% people कठारे नाही that means it is successful. So that is called as the what it is a method of sampling. And actually how you have to implement, one is probability sampling, another is non-probability sampling. Okay. Probability means what? It may happen, means I have what done the labor for the exam, so I expect that I will must score 90%. There is a probability. How I am giving a probability? Because I work for it. Non-probability means what? Like the result will come in this year, the 10th result asila, so they're not having probability because I'm not giving exam. So how though it is evaluated? It is evaluated by the teacher. It may be like 3-year results, or it may be if I nearer to the teacher, then I got the good mark. Okay, that is a non-probability. May I get? Maybe I'm not getting because I'm not working for it. I'm not giving an exam, but it is a non-probability. Means I'm not working for it, so I expect that it may be a good or it may be a bad effect. So is a probability of sampling rahila. Probability of sampling रे different method अछि. Simple, random, systematic, stratified, cluster. Non probability रे रहिबो
convenience, quota, judgment and snowball. अमित बुझिला जे हाँ सर। प्रियदर्शिनी बुझिला सागर? Yes, sir. Yes, Then sir. what is that probability? Probability sampling means that every member of the population has a chance of being selected. It is mainly used quantitative research. If you want to produce the result that are representative of whole population, probability sampling techniques are most valid choice. Probability means that every member of the population has a chance of being selected. It mainly used as quantitative research. If you want to produce the result that are representative of whole population, probability sampling technique are most valid choice. It's just like that. Suppose if I'm going to any location to research among the people, तो सेठी कौन हबो ना जो माने देखिथिबो लीडर थांदे से माने आगु पळेसन ए आमको नहीं टेस्ट करो किबा जो माने किछि धर मो बेनिफिशियरी प्रोवाइड करबी सो लीडर माने सब आगु बसी ओके बट आई एम नॉट टेकिंग दैट लेवल माने लीडर so I see that there is a huge gather of people is there, so I'm not take the leader. I choose any random people. I don't know their name. I don't know they may be a leader. I don't know. I see that they are not aggressive, but I choose that people. But randomly, use people dekhe. So also, okay. So that people are also not expected. She be expecting kari nathi ho. Je tar chance asi. That is called the probability. It means like if I'm giving a good example, like suppose you are the YouTuber. Okay, you are the YouTuber and okay, so if you want to produce the result of the representative of all the population, probability of sampling is used. जेमती देखिबा सपोज मु गोटे ऑडिट करियो जाइथिबी तुमे गोटे गोटे ऑफिस रे काम करिसो ओके एंड यू आर वर्किंग इन ए फूड फैक्ट्री एंड मु सेठी के जीबी मु टेस्ट करबी से जो प्रोडक्ट ता भलो अछि कि नै तमे कोन करिवो नै गोटे एमती ड्रम रे थिबो तुमको सर एटा नियंतो एटा टेस्ट करो. But I am not testing that what you are provided. I am testing that I have to take from there. मु ता भीतर खोजी निजे बार करी. आ जदी सेटा गुड हेतो that means that what you are providing that is good. आ जदी मु जोरा टेस्ट करी जोटा बैड हे गला that means एटा माने ठीक नै एटा को हम रॉन्ग बोली एको डिफाइन करियो. So it is कोन थाय ना any people having a chance to being selected. That is called the probability. So यूट्यूबर कोन एग्जांपल दोतले हाँ यूट्यूबर होची जेमती सपोज तुमे यूट्यूब लोड करछो आमे सब यूट्यूब लोड करछे ओके एंड जेमती कि देखिबो एबे गोटे वायरल हेची वन ऑफ द पीपल इन ओडिशा से आमे भी पखाळ खाउची सी भी पखाळ खाउची किंतु ता पखाळ खाइबाटा एते वायरल हैला जे हां ही इज गेटिंग ए व्हाट lakhs of money okay but आमे भी खाउचे आमे शूटिंग होचे but that is not ताको शूटिंग करी पकेले हां ताको कही लाइक भी कही करनाती but ता वीडियोटा एते वायरल हे गला जे ते रहला माने we are also uploading video you are also uploading a video but that people is selected that is called the probability who think that गोटे remote area रे गोटे आदिवासी एरिया रे गोटे लोकोटे से चांस पाइबो for that. So that is called as the word probability. So you do
that work, but maybe you are success on that. Another is simple random. In a simple random sample, every member of the population has an equal chance of being selected. Your sampling frame should include the whole population. It is simple random re kon asibo, every people will select it. We have to give a range. Okay, say range bhitaru mu select karibi. Okay, suppose mu aji tika debi, ame jetale booking karuche na jo vaccine pai, we have to take the vaccine. Okay, it is a compulsory, but it is not like that. When you book a slot for it, every person slot is booked. समस्त slot से book है जो बोली chance न थे, तो मे भी कौन हुए ना जो slot टा booking हबो आजी तमर है जीवो, पुनी आउ कर हबो ने, पुनी किछि दिन कर पारे आउ जने लोक रहे जीव. So that is called a simple random method. Means every person having a chance. Means every person will be vaccinated. But when they are vaccinated, you don't know. When you are having a chance, that you don't know. But every population have equal chance being selected. So your sampling frame should include the whole population. So you have to cover the whole population. Means whole population should be vaccinated. I divided group. I divided the category. Category like 18 to 45, 45 to 60, 60 to that person. Then now we coming to the child that belongs to 0 to 18. Okay, so not kids, like 10 to 18. Then another part of the people like 0 to 10 will also come. But compulsory every will be vaccinated. But when the chance will come and when the slot is booked, that is not no to the other person. The example is what? You want to select a random sample of 100 employee of company X. You assign a number to every employee in the company of the database 1 to 1000 and use the random number generated, select the 100 number. Means company having 100 employees. Okay, you select a simple random sample of 100 employee of a company. You assign a number 1 to 100, 1 to 1000. मु 1000 जाए number तक declare कर देली. मु 100 करके select करी. Okay, suppose I take 100, 1 to 100, 100 to 200. It is a category, but I will choose what? मु 100 रो 5टा, 1 रो 100 भीतर 5टा लोक लेबी. 200 रो 300 भीतर 5टा लोक नेबी. 300 रो 400 भीतर 5टा लोक नेबी. So randomly I selected. It may be any number. Okay, तापर तांका over हो गेले पुनी randomly गोटे number. Okay, so that is a simple random collection. Every people having a chance, but when the chance will come, that is on. बुझेला दिटा method? Yes, sir. Yes, sir. Systematic sampling. Eta out के ये रहिबो. Systematic sampling is simpler to simple random sampling, but it is usually slightly easier to conduct. Every member of the population is listed with a number, but instead of randomly generating a number, individual are chosen at a regular interval. माने जेमते एटा नंबर हैला 1 रो 12 असाइन हैला, मु प्रथमे 2 रो गोटे नेली, 5 रो गोटे नेली, 8 रो गोटे नेली, 11 रो गोटे नेली. तापर कोन करबी ना 1 रो गोटे नेबी, 3 गोटे नेबी. ओके, तो एमती जनरेट हो गोटे गोटे छाडी कि नेबी, पुनी ए जो नंबर गुडा 1 3 3 5, ओके 5 7. तो ए टाइप रो गोटे सीक्वेंस ऑफ नंबर रे मुनेबी. All employee listed in the alphabetical order from the first 10 number. You randomly select a starting point. Number is 6. From the number 6 onwards, every 10th person on the list is selected. माने 6 रू जदि गोटे starting point नेबी, 16 choose हबो, 26 choose हबो, 36 choose हबो, 46 choose हबो. जेमते आ गोटे जतले नेबी, एटा 5 5 रे मु choose करी. You end of the list of the 100 people. पास मो 10 10 रे नेबी, 10 10 रे पहला परे
तापर 5 5 एमती कमी कमी गले अल्टीमेटली कौन हम समस्त को कवर करिए बुझेला सिस्टमैटिक सैंपलिंग Yes, sir. Yes, sir. next is stratified sampling. What is that stratified sampling? Stratified sampling involves dividing the population into subpopulation that may differ in the important way. It allows you to draw more precise conclusion by ensuring that every subgroup is properly represented in sample. To use this sampling method, you divide the population into subgroup called as strata, and based upon the relevant characteristics, gender, age, range, income, bracket, and job roles. Okay, एमती धर सपोज मु गोटे ह्यूज पॉपुलेशन को नेली ताकू मु डिवाइड कर देबी ओके डिवाइड कर देबी कोन ना सपोज हमर जदी अछि रिलीजन वाइज मु डिवाइड करबी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध ए सब डिवाइड मु कर देबी डिवाइड कला परे तापरे सपोज मु देखिबी जे मु धर बिरयानी बनेइजी तो फ्रॉम बिरयानी टा को मानक पय बेसी रिलेवेंट हो मुस्लिम कैटेगरी पे जीवी से रिलीजियन पे जीवी मु केक बने नॉर्मली इट बिलोंग्स टू मींस एवरीबॉडी इज प्रिफर बट केक जदि हमें कहबा तो हमें अल्टीमेटली जदि हमें तीनटा ग्रुप नहीं छे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तो केक जदि हमें कहबा इट मस्ट बी बिलोंग्स टू दिस क्रिश्चियन पीपल आ जदि नॉर्मली हमें कहबा नहीं अरुआ भात डालमा जदि अछि हेची माने हमें आखि बुझी कह देबा जे ना ए माने बिलोंग्स करिबा माने गोटे भोजीर अरेंजमेंट हेची गोटे जगह बिरयानी हेची गोटे जगह केक आमे करछे गोटे जगह अरुआ भात डालमा करछे एंड देखिए हिंदूज जो कैटेगरी मोस्ट ऑफ द पीपल इज गोइंग टू दैट प्लेस कारण हमर जते बे पूजा हुए हमें से जिंस न तांकर पूजा हेले किबा पर्व हेले तांकर ए सब जिंस नियंती केक नियंती को माने बिरयानी खांती so that is a stratified sampling. I create a category okay like first हमें category कर दवा 65 रो जो लोक मल रहले तांको वैक्सीन दिया हो but I again category it who are the male and who are the female again category it who are the diabetes and who are the non diabetes patient so category करके जीवी and I based focus on the particular category. So see that example. The company has 800 female employee and 200 male employee. Just I have given an example. You want to ensure that sample reflect the gender balance of the company. So you sort the population in the two stratified or two strata based upon the gender. Then you use a random sampling on each group 80 women 20 men which gives you the representative sample of the 100 people okay माने 200 female अछंती 200 male अछंती so how you category it so every woman माने गोटे मेल पाखरे they assigned with the 4 women for working okay or for judgmental so that reflect the what gender balance okay so that is called the sampling okay तो आमे देखले ए कैटेगरी लोक अधिक अछंती तर वैक्सीन देबी मु एठी कोन करिवि नागो चारटा फीमेल को वैक्सीन दियाला से समय मु जण को अलाउ गोटे मेल को अलाउ करी तो चारटा फीमेल अगर नेबे गोटे मेल नेबे पुनी चारटा फीमेल गोटे मेल so in this way I categorize it that is called the stratified sampling means every people having getting a same time माने समस्त सेम समय को अपेक्षा करी आ जदि मु आगो अंको दे देबी ने गोटे मेल गोटे फीमेल कर देबी ये आगो सरी जीव मेल आगो सरी जीव फीमेल रही जीव तो मु एठी गोटे आईडिया करबी जे फर्स्ट चारटा फीमेल जीवे देन गोटे मेल जीव तो समस्त वेटिंग टाइम टा सेम रही तो ए जो फर्स्ट लोकटा जो टाइम रहइबो धर सेकंड लोकटा जति समय वेट करिवो
ए चार जन पर जो लोकटा चांस पाइबो से समय वेट कर तो दैट इज द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बुझेला हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. तापर हमें आसीबा cluster sampling also involves dividing the population into two subgroups, but each subgroup should have similar characteristics to the whole sample. Cluster sampling also involves dividing the population into subgroups, but each subgroup should have similar characteristics to the whole sample. Instead of sampling individual from each subgroup, you randomly selected the entire subgroup. If it is practically possible, you might include every individual for each sample cluster. If the cluster themselves are large, you can also sample the individual from within each cluster using one of the technique above. This method is good for dealing with the large and dispersed population, but there is more risk of error in this sample, as there could be a substantial difference between the cluster. It's difficult to guarantee that sample cluster are really representative the whole population. The company has offices in 10 cities across the country, all with a regular same number of employees, similar role. You do not have the capacity to travel the every office to collect your data, so use random sampling to select the 3 office. These are your cluster. Okay, तो एटा में कहिबा क्लस्टर सैंपलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन सब ग्रुप मु सब ग्रुप रे डिवाइड कर देल रिलीजन वाइज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द होल सैंपल तांका भीतर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थिवा दरकार आई चूज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस but they having a same sample, but that means what, either they belongs to same country or either they belongs to same state or either they belongs to a particular area. Suppose I take the area of Cuttack. Okay, in Cuttack, the way of people or the relationship or the way of what celebrate the festivals is different to the other district. जेंति हमर एठी आसले कटक रे दुर्गा पूजा फेमस रहउची, and the way of the Muslims are using their festives, Christian are using the festive. If it is outside of our district, it is different. In communal, Hindus are like, if you say in our in Cuttack, Hindu population is higher. In Bhadrak, Muslim population is very higher. So when there is a Eid, so at that timing, in that festival, if you move to that place, you feel that kind of environment. If you coming to Cuttack, Durga Puja is one environment where you feel that kind of flavor. Same thing if you going to the other district like Dhenkanal, you in Lakshmi Puja, that is famous. Okay, they have celebrated the Durga Puja, but it is not like that we celebrate in the Cuttack city. So depending upon the people, or depending, we are taking the same people, but when the place is different, then the scene is also different. So it is not like that. It is not practically possible. If you divide the groups and you ensure that you are getting the accurate result, so it is not possible. It may be correct or it may not be correct. If you take the 3 category and change the state, change the country, then it is different.
that the example it is saying that the company has offices in 10 cities across the country. In similar role, you do not have the capacity to travel the every office. So you have to check randomly, you have to check the 3 office. So that 3 office is called the cluster. बुझिला? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is a cluster sample. This one. I'm not choosing each category. I'm choosing both 2. आ भीतर गोटे नहीं जी. सब category को नवा पे मत sample माने easier no. But maybe जदि मो एठु गोटे नहीं थांती, एठु गोटे नहीं थांती, एठु गोटे नहीं थांती, एठु गोटे तीन थांती. That means it gives me good result. किंतु जदि हमर 5टा फैमिली अछि, हमर गोटे बाउंड्री माने एटा होछि तमरो जेंति कहया पुराना ये खंजा बोली कहल जाय. माने गोटे बिल्डिंग रे तुमे 5 parents रहउचंती, 5 brothers are living and they having a family. I am not checked the 3 family, I have checked with the 2 family. And I declare that जदि 2 family positive आछंती then it is positive. जदि negative आछन हम कहबे building टा negative. But आमे 3 जन को चेक करलेन. So we are not expecting the good result from here. Okay, so I am not checking the individual, I am checking the whole people in a full family. But I am not check the this one, this 3. माने 2टा family रा सब लोगों को टेस्ट करली, but other जो 3 family बंची गले तांको मु टेस्ट करले. Okay, so non-probability sampling method is what? In a non-probability sample, individual are selected based upon the non-random criteria, and not every individual has a chance to be included. This type of sample is easier and cheaper to access, but it has a high risk of sampling bias. That means the inferences you can make about population are weaker than the probability sample, and your conclusion may be more limited. If you use the non-probability sample, you should still aim to make the representative of the population as possible. Non-probability sampling techniques are often used exploratory and qualitative research. In this type of research, the aim is not to test a hypothesis, but about a broad population, but to develop an initial understanding. जेमते कहवा हमर कंट्री रे 30 स्टेट हमर 30 स्टेट अछि सब लोक रहउचंती. मोदर मिजोराम रो गोटे लोक को नै जीवी ताको तार कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करी कि मु टोटल इंडिया को जदि रिप्रेजेंट करिवि, इट इज वेरी रॉन्ग थिंग. दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी. मु जदि महाराष्ट्र रो गोटे लोक उठेबी, सपोज मु सलमान खान को उठेबी, उठे के कहबे ना ये धनी अछि माने इंडिया रे सब जगह धनी. So that is not possible. That is a non-probability sampling. I am not taking one people and represent whole the country. It is not possible. Okay, गोटे लोक को नहीं कि आमे समस्त wealth management करिवा, health management, wealth management करिवा, is not also possible. माने गोटे लोक रैंडमली हमें चूज करिवा, गोटे लोक को एगो टेस्ट कर दवा ना ये नेगेटिव अछि ना कंट्री टा पूरा नेगेटिव, माने आगो ग्रीन जोन कर दियो. एटा बहुत डेंजरस है. But in some factor it is acceptable. But देखो जेमते कि प्राइम मिनिस्टर रही चंती टोटल कंट्री पे, किंतु सबु स्टेट रे गोटे गोटे लीडर अछंती, सेठु हमें चूज करियो. तो हेडा होची नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज कले भी हमें गोटे गोटे लीडर बा रिप्रेजेंटेटिव रखिबा इन ईच कैटेगरी. बुझिला? तो नेक्स्ट क्लास रे आर ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रो आउरी मेथड देखिबा कोन कोन रही छी. तो एटा सर जल्दी करी गला तापर हमें स्टार्ट करिबा NumPy. ओके, सो वी मूव टू द प्रैक्टिकल वन. ओके, चलो, गुड नाइट.